cricket enthusiasts just like you guys. If you have any property requirement, just call us on the number which is right over here. Now, enjoy this little cricket tidbit. Don't want to bore you with a proper advertisement. And this guy, idiot Kapil Dev is coming and tell us we'll win this game. Yeah, kya pagal hai hamara captain. Yeah. I mean, not now. Huh? That time captain. That is what we thought captain. But then Kapil Dev was...
Hello all, good evening, and this is the Jfsc Champions Cup, the inaugural edition of this new tournament from the Jolly Friends Sports Club. And we are here at the Fatima Cricket Ground. This is your commentator Shalin Gupta welcoming all the viewers and spectators once again to a wonderful tournament, the start of a tournament. And we've got two absolutely brilliant teams locking horns in the first match, the opening match of this tournament, the Jfsc Champions Cup, the Dads Champions Cup. And all the dads have come again to participate and showcase their talent in this tournament. The Jns Mustangs locking horns with the Utpal Gladiators, and the news from the center is that the Jns Mustangs have won the toss. They've elected to bat first. This is the end of the first over, 8 without loss. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. And we're back live. Jns Mustangs 8 for no loss after the first over. Ritesh Balani coming into bowl his first over. Vishal Majumdar is the opening batsman, the captain of the team, along with Karan Jain, and the captain of the Utpal Gladiators is Sunny. He's lost the toss and he has been asked to bowl first. His team has been asked to field. Vishal Majumdar, a very good batsman. This is the Jfsc Dads Champions Cup, the first edition, the inaugural edition of this wonderful tournament. Ritesh Balani coming into bowl his first over. That's a very good delivery by Ritesh. Starts off well with a dot. He was trying to pull that, Vishal, but did not succeed on that occasion. So good start by Ritesh. And just like the other tournaments, we'll be bringing the Hindi commentary to you as well. The Jfsc Dads Champions Cup. Oh, and this time was appealing for an LBW, but just a dot. That was going down the leg side and no chance for the LBW on that occasion. Umpire clarified that. Oh, and that should be a wide. That did swing a lot and the length was also quite short. So an additional run added to the tally. 9 for no loss. This is just the second over. Another dot this time. It's coming back nicely after that wide was bowled. Oh, that's a good delivery. He's missed that. The keeper misses that as well. He's trying to drive it. Vishal Majumdar misses that.
Oh, and that's a good delivery. Another dot, and just one of the over till now. That's a very good start by Ritesh Balani. This is his first over and just the second in the innings. Short delivery cut beautifully, and this should be a single. There's a fielder out there. That was a good stop by the fielder. Oh, and that's a overthrow, but they did not go for the run. Probably it was hitting the batsman before it went as an overthrow. That's the end of the second over. 10 without loss, and that's a good start by both the teams. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Kamesh Shah coming to bowl his second over. That's a good start by him. Vishal plays it nicely towards the long off for a single with a straight bat. Very good shot indeed. Comes down the track. That's a wonderful shot. This will be a boundary. Very good start by Karan Jain. Just have a look at that. Comes down the track. What a shot towards the long on boundary. There was a fielder out there at mid-on, but no chance for him as well. That was struck really hard and straight. Very well played by Karan. That is his first boundary. Oh, that's a good delivery, but he's played it well again. Oh, and that's a boundary. 2 in a row now. Sloppy bit of work at the long off boundary. And that's another one. So Karan Jain playing some really good shots. He's on 9 all of a sudden of just 3 deliveries. Just a single that time. No, they haven't taken the single. Straight to the fielder at mid-on.
That's a good delivery. Good comeback by Kamesh. So 2 dots in a row after 2 boundaries. He's bowling a tight line now. Oh, and that has been picked up really well. Could be a big one. Huge 6. Wow. And the first of this match and this innings. But what a shot. What a pickup. Just have a look at that. Oh, and that was absolutely brilliant. That is out of the ground. A huge 6. Wow. We'll show you the replay once again. You can watch this shot all night long. Such is the talent of this guy, Karan. And that's the end of the over. 25 without loss after 3 overs. And this was an expensive over as far as Utpal Gladiators are concerned. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Ritesh starts off with a new over. That's a wonderful start. Vishal Majumdar opened all ends up on that occasion. That was such a good delivery. And he's a very unique bowler, Ritesh Balani. Bowls with a short runner but hits the deck hard. Tries to cut the batsman into half. And he's got some really good and raw pace. Balani coming to bowl his next delivery. This is second over. Oh, and this time a full toss, and that is why. Oh, what a stop by Deepak here at the covers. Stopped the certain boundary. Absolutely stunning bit of work by the fielder. Show you the replay. Stunning effort. It's a wonderful shot, but have a look at the fielding effort. Wow, that was top class stuff by Deepak. Oh, and this time a wide, and the wicketkeeper has missed that as well. So 5 runs gifted here. Poor bowling this by Ritesh Balani. He was bowling so well, but absolutely missing the line on that occasion. Just have a look at that. Outside the leg stump. No chance for the keeper as well. Can't blame the keeper as well. Brilliant batting this by the Jns Mustangs, but some support by some poor bowling by Ritesh Balani on that occasion. 31 without loss. This is just the 4th over. They have started cruising really well. Comes down the track, and Deepak is on fire. Just have a look at that replay. And the effort once again. Chance of a run out, but completes the single. Just have a look at how well is he fielding at that position. Oh, he's just brilliant. Stopped another boundary. So he has saved at least 5 to 6 runs, if not more, for his team already in this over. What a performance by the fielder. Deepak, just have a look at that once again. Such a wonderful shot. Oh, and stunning effort. Ritesh with his next delivery. Oh, and this time missing leg on that occasion, but that was such a good delivery. Great comeback by Balani. Coming into bowl his next delivery.
Another good delivery. He's played it well, but straight to the fielder. They do not take the single. Coming into bowl, the last delivery of this over, the fourth in the innings. Oh, what a delivery! He's cut him into half. He's cleaned him up. Wow! Absolutely stunning bowling. Just have a look at that. What a delivery. Even Vishal Majumdar acknowledging that. Stunning bowling here. We show you the replay once again. Oh, that was such a wonderful delivery. And he's got the breakthrough for his team that they were looking for. And 32 for 1 after 4 overs. Hitesh Bhalani gets his first wicket. End of his second over. But a very good over and a very successful one as well. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned. Jns Mustangs lose their first wicket on the score of 32. And we got Ronak Mehta, who was bowling his first over, being introduced into the attack. Ronak Mehta coming into bowl his first over. Introduced into the attack. 4 overs, 32 for 1. Jns Mustangs. They've started off well, but they just lost a very important wicket in the last delivery of the previous over. Vishal Majumdar. Clean bowled by a beauty. Just have a look at that. What a delivery that was. And here we go, Ronak coming into bowl his first delivery. That's a good shot. And he's missed that. And a quick single taken by both the players. That's a good delivery by Ronak. The delivery lets it go on that occasion. Mehul Shah, the new batsman. That's a very good delivery. First up to the new batsman. Another good delivery, 2 dots in a row.
What a delivery, and this time he's missed it again. So 3 dots in a row. Just have a look at that. Brilliant bowling. Just have a look at the length. Oh, and that was so close to the edge. Another wonderful delivery. He's on fire, this guy. 4 dot deliveries. Just have a look at that once again. And the length is the key. Try to come down the track. Bowled it really well. Ronak Mehta, 4 dots after the first ball went for a single. Oh, that's a very good shot. And in the gap as well. It should be a boundary. Will be a boundary. What a shot that is. So great comeback by the batsman. Beautifully played towards the extra cover boundary, and that too in the gap. So the best shots of the evening till now. 37 for 1 after 5, and we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. And we've got Aditya Vargaria coming to bowl his first over. This is the start of a spell, being brought back into the attack. The left arm spinner. 37 for 1 after 5. Aditya Vargaria will have to bowl a really good spell here. Karan looks in. Superb touch. That's a flighted delivery to start, and that was a good one. A dot to start with. Coming into bowl his next delivery. Oh, and he's played it brilliantly. Missed that completely. Beaten. All ends up there. Okay. Aditya with his next delivery comes down the track again, and this time what a shot that is. That's a flat 6. Wow. And the long on fielder at the boundaries, just a spectator. Just have a look at that. Came down the track so confident. So precise. What a shot. Huge 6. Stunning bit of work there by Karan Jain, who's raised to 23 of just 11 deliveries. This time just a single chance for an out, but Slim is home. Played it well towards fielder at onside, but a quick single taken. Oh, and he's turning the ball sharply here, especially after it's pitching. 44 for 1. This is the 6th over. 7 already of the over. Oh, and this time should be a boundary, and will be a boundary. It's a wonderful shot. Let's have a look at that. That was outside the leg stump, asking to be hit, and did not disappoint his team on that occasion. Mehul
He's playing such a wonderful knock. So 6 gone, 48 for 1. We'll take a quick break and be back soon. And we'll be back with Hindi commentary, so stay tuned, viewers. रौनक मेहता आ रहे हैं अपना दूसरा ओवर डालने और एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं का। मैं आपका कमेंटेटर शालीन गुप्ता एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं एक नया टूर्नामेंट, बेहतरीन नई प्रतियोगिता जेएफएससी डैड्स चैंपियंस कप, जो कि फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर खेली जा रही है। आज से इस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। छोटी गेंद से शुरुआत रौनक की, अच्छा पुल शॉट करण के द्वारा, लेकिन एक ही रन मिलेगा। क्षेत्ररक्षक तैनात है वहां पर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में सीमा रेखा के पास। रौनक की अगली गेंद आसानी से खेल दिया उसे, एक रन के लिए। जी नहीं, रन नहीं भागा। मेहुल स्ट्राइक पर और अच्छा खेल रहे हैं, 8 रन 7 गेंदों के बाद। करण जैन की तो क्या ही बात है, लगभग 200 का स्ट्राइक है, 13 पर 25। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं रौनक और इस बार वाइड, लेफ्ट साइड पर पैरों से बहुत दूर गई गेंद। अगली गेंद और बेहतरीन गेंदबाजी, और ये बाहरी किनारा और विकेट कीपर ने बहुत ही आसान सा कैच लपका, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी रौनक के द्वारा। और उनका ये पहला विकेट और जेनस मस्टैंग्स का ये दूसरा विकेट गिर गया है। बेहतरीन गेंदबाजी और क्या कैच लिया है। देखने में आसान होते हैं लेकिन आपको दस्तानों से बाहर नहीं जाने देना है। और इस बार यही क्या विकेट कीपर ने बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पर श्रेय मिलेगा रौनक को एक और विकेट अपने दल को लेकर देने के लिए। स्कोर हो गया 50 रन पर 2 विकेट। 7वां ओवर चल रहा है। रौनक शाह की अगली गेंद, नए बल्लेबाज को हर्ष गांधी हैं। नए बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में सीधे बल्ले से खेला हर्ष ने, लेकिन रौनक की तारीफ करनी होगी यहाँ पर। रौनक मेहता बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी डालते हुए। छोटी गेंद, हर्ष ने उसे कट किया। स्वीपर कवर के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा आसानी से। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं हर्ष गांधी। इनके कारनामे हम बहुत ही
प्रतियोगिताओं में देख चुके हैं पहले भी इस सर्किट में, और ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। और इस समय आए हैं तो लगभग 13 ओवर बचे हुए हैं, 13 से ज़्यादा ही। खाता खोल लिया उन्होंने अपना दूसरी गेंद पर ही, तो एक बड़ा स्कोर भी खड़ा कर सकते हैं यहाँ पर। सक्षम हैं, ज़बरदस्त हैं और तकनीक भी बहुत अच्छी है। बेहतरीन शॉट, आगे बढ़कर बड़ा छक्का होना चाहिए ये। जी हाँ, लॉन्ग ऑन का क्षेत्ररक्षक सिर्फ दर्शक की तरह देखता रहा। ये देखिए क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं करण, आगे बढ़कर रौनक की गेंद पर बड़ा छक्का। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करण के बल्ले से यहां पर देखने को मिल रही है। क्या शॉट लगाते हैं, 31 पर आ गए सिर्फ 14 गेंदों के बाद। और एक बार फिर से दिखाएंगे आपको, 7 ओवर में स्कोर हो गया 57, लेकिन क्या बल्लेबाजी है, वाह, बहुत बड़ा छक्का। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। आदित्य वगैरह आ गए हैं। अच्छी गेंदबाजी और ये आउट। हर्ष गांधी यहां पर वापस जाते हुए पेविलियन, बेहतरीन गेंदबाजी और बड़ा विकेट लिया है। और कितना बेहतरीन कैच, शॉर्ट कवर्स पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन हवा में गेंद थी और संतुलन नहीं बना पाए उस शॉट पर, और बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ उत्पल ग्लैडिएटर्स को। ये देखिए, सीधे बल्ले से तो खेला, लेकिन हवा में खेला और सीधे हाथ में दे दिया, और बढ़िया कैच भी। तारीफ करनी होगी आदित्य की यहां पर। और ये पहला विकेट मिलता हुआ आदित्य को अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर। तीसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर जेनस मस्टैंग्स का। और हर्ष गांधी ऐसे बल्लेबाज को इतनी जल्दी पेविलियन भेजा है, जबरदस्त गेंदबाजी है। आदित्य की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फिर से दिखाएंगे, अमूमन सीधे बल्ले से ही खेलते हैं, लेकिन जल्दबाजी करके थोड़ा ऐसा लग रहा है। देखिए आगे बढ़कर झुके नहीं, अगर आप देखेंगे थोड़ा झुकते अगर तो गेंद और जमीन के नजदीक होके जाती। ये देखिए आगे बढ़कर बिल्कुल नहीं झुके, सीधे खड़े होकर खेल लिया है शॉट, और शायद यही इनके पतन का सबसे बड़ा कारण था। बेंड करके झुक कर खेलते अगर तो ये गेंद अपने आप सीधे या लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाती। ग्राउंडेड शॉट की तरह बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और यहां पर ये आउट। जबरदस्त बल गेंदबाजी यहां पर। नीरज परब आए नए बल्लेबाज, और आते ही वापस पेविलियन जाएंगे। क्या गेंदबाजी है देखिए। और यहां पर कॉट एंड बोल्ड दे दिया है नीरज परब को। पहली गेंद पर प्रसन्न नहीं है, जरा सा भी खुश नहीं है, शायद उनके हिसाब से आउट नहीं था, लेकिन क्या बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी और विकेट कीपिंग भी बहुत बढ़िया। लेकिन गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फ्लाइट में यहां पर चकमा दिया, छकाया, और आदित्य वागेरिया अचानक से हैट्रिक पर आ गए। 57 पर 4 हो गया स्कोर। क्या शुरुआत है इस डैड्स चैंपियंस कप की। पहला मैच हो रहा है और आदित्य वागेरिया ने यहां पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बाएं हत्था स्पिनर और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। तो 57 रन पर 4 विकेट यहां पर। खासी मुश्किल में आ गई है जेनस मस्टैंग्स की टीम। बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ाता हुआ। सिर्फ करण अभी तक सशक्त खड़े हुए हैं और ताबड़तोड़ रन भी बना रहे हैं। और हैट्रिक पर आ गए हैं आदित्य
वागेरिया, अगली गेंद, नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर, छोटी गेंद, खराब गेंदबाजी है और बढ़िया कट शॉट, 4 रन मिलने चाहिए यहां पर, कोई भी क्षेत्र रक्षक रोक, और बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, वाह, तारीफ करनी होगी यहां पर, 2 रन रोके अपने दल के लिए। देखिए क्या जबरदस्त क्षेत्र रक्षण, ये तो लग रहा था चौका ही जाएगा, लेकिन स्वीपर कवर से भागते हुए आया डीप पॉइंट पर, इस गेंद को रोका और 2 ही रन दिए आदित्य ने। पहली गेंद छोटी डाल दी नए बल्लेबाज को और ये हैट्रिक गेंद थी, तो विकास लिंगा है नए बल्लेबाज, पहली गेंद पर खाता खोला। ये देखिए ये गेंद डालनी थी इन्हें और जबरदस्त क्षेत्र रक्षण, बहुत बढ़िया क्षेत्र रक्षण हो रहा है। 1 रन आसानी से मिल सकता था लेकिन शॉर्ट कवर के क्षेत्र रक्षक ने मौका नहीं दिया। क्या जबरदस्त फील्डिंग, वापस लाइव आ गए हैं। अगली गेंद, छोटी गेंद, एक बार फिर से विकास लिंगा ने इसे पुल किया मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 ही रन। जी हाँ, लंबाई गेंदों की सही नहीं है, पिछली 3 गेंदों के बारे में तो मैं यही कहूंगा, 2 गेंदें छोटी और 1 फुल टॉस। देखा जाए तो हैट्रिक पर थे, 60 पर 4 हो गया स्कोर, 8 ओवर खत्म होने वाले हैं, 1 ही गेंद बची है 8 ओवर की समाप्ति के लिए और करण अभी भी खेल रहे हैं। देखते हैं क्या इस बॉल में बड़ा शॉट लगाएंगे और बच गए, अच्छी गेंद थी ये, अंदरूनी किनारा लगा और 2 रन के लिए आना चाहेंगे लेकिन 1 से ही संतुष्टि और ओवर की समाप्ति यहां पर 61 पर 4, 8 ओवर के बाद 32 पर खेल रहे हैं करण जैन, सिर्फ 15 गेंदों के बाद। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे, बहुत ही सफल ओवर है, सिर्फ 4 रन और 2 विकेट आदित्य वागेरिया को। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी वापस आते हैं एक विराम लेकर। कुणाल लखानी को गेंद सौंपी गई है, पहला ओवर इनका और पहली गेंद डॉट, अच्छी शुरुआत। और ये बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन लेग स्पिन गेंदबाजी डाल रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा रन अप स्पिनर का नहीं और मीडियम पेसर का ज्यादा लग रहा है। बड़ा शॉट यहां पर और ये 4 रन है या 6 देखना पड़ेगा, चौका है जी हां। इनसे आप बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, इस बार गेंद की लंबाई को बहुत ही बढ़िया अंदाज में पकड़ा इन्होंने और 4 रन ले लिए वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर। फुल टॉस गेंद, बेहतरीन शॉट और अच्छा क्षेत्र रक्षण, तो 1 ही रन मिलेगा लॉन्ग ऑन पर।
और ये अच्छा शॉट, लेकिन क्या ये चौका है? ऐसा लग रहा है कि शायद ये 4 रन। ओ नहीं हुआ, बेहतरीन। तारीफ करनी होगी यहाँ पर क्षेत्ररक्षक की, और रनआउट का भी यहाँ पर एक प्रयत्न था, लेकिन जी हाँ, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण। बहुत बेहतरीन क्षेत्ररक्षण, बढ़िया कट शॉट, और ये ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद स्कोर 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे, आपके साथ बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। कुणाल लखानी के पहले ओवर में 7 रन आए। बड़ा छक्का, तारीफ करनी होगी करण की यहाँ पर। आगे बढ़कर छोटी गेंद, बेहतरीन शॉट, और यहाँ पर 4 रन मिलने चाहिए, लेकिन क्षेत्ररक्षण अच्छा है स्वीपर कवर के क्षेत्ररक्षक के द्वारा। और क्या शॉट था आपको। रिप्ले दिखाएंगे, देखिए कैसे आगे बढ़कर खतरनाक शॉट, आगे बढ़कर प्रहार, हालांकि वापस आ गए लाइफ, और यहां पर चूक हुई क्षेत्ररक्षक से और 4 रन मिलने चाहिए, लेकिन क्या क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं, वाह। तारीफ करनी होगी स्वीपर कवर पर खड़े इस फील्डर की, कितने चौके बचाए हैं अपने दल के लिए। करण के बल्ले से निकला बेहतरीन शॉट, आपको दिखाएंगे। अगली गेंद पर आते हैं, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी, और ये देखिए कैसे आगे बढ़कर बेहतरीन प्रहार किया था, फुल टॉस बनाया इस गेंद को, और बड़ा छक्का। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, और ये बड़ा शॉट, क्या इस बार आउट होंगे? जी नहीं, गैप में गिरी ये गेंद, बड़ा शॉट था ये, आगे बढ़कर हवा में खेल दिया, 2 रन ले लिए। ये देखिए जिस तरफ मारना चाह रहे थे उस तरफ गेंद गई नहीं, लेकिन 10 रन आ गए इस ओवर में करण की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते। देखिए ये कैच नहीं हो सकता था, बहुत दूर था। 78 पर 4 हो गया स्कोर, और 10वां ओवर चल रहा है, लगभग 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन औसत इस समय। आदित्य वगेरिया ने 2 विकेट तो लिए, लेकिन ये महंगा ओवर गया इनका। करण जैन ने अच्छे खासे रन बनाए, और बढ़िया शॉट, एक बार फिर से 1 रन लिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर, और ये ओवर की समाप्ति। 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवरों के बाद। बढ़िया बल्लेबाजी है, और करण जैन की तारीफ करनी होगी, 46 पर आ गए सिर्फ 23 गेंदों के बाद, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। और अंपायरों ने निर्देश दिए ड्रिंक्स ब्रेक के। विराम लेकर वापस जुड़ेंगे, आपके साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
कुणाल लखानी का अगला ओवर स्ट्राइक पर करण ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं सभी के साथ जुड़ने इस बेहतरीन डैट्स चैंपियंस कप में। और ये पहला मैच है इस प्रतियोगिता का फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर। ये दूधिया रोशनी के नीचे मैच होता हुआ और अच्छी गेंदबाजी, आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था करण का और इस बार छका दिया, दिशा बदल दी और बहुत ही सूझबूझ भरी गेंदबाजी कुणाल की। उन्हें पता है कि करण आगे बढ़कर शॉट्स लगाना पसंद करते हैं। और बहुत ही ज्यादा सजग रहते हैं आगे बढ़कर। बहुत बार स्टंपिंग का एक मौका जो होता है वो विकेट कीपर के पास होता है, लेकिन करण जैसे बल्लेबाज ज्यादा मौका देता नहीं है। एक रन लिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलकर। फुल टॉस गेंद थी और थोड़ा सा इन्हें गेंद के टप्पे पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कुणाल लखानी को। बेहतरीन गेंदबाज है लेकिन जो संगतता एक होती है, कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं, वो थोड़ी लानी पड़ेगी। 6 की 6 गेंद टप्पे पर आना जरूरी है। आप अगर 2 गेंदों के बाद फुल टॉस देते हैं तो पूरा दबाव हट जाता है बल्लेबाज के ऊपर से, और वही हुआ इस बार। 2 अच्छी गेंदों के बाद इन्होंने फुल टॉस दी, वो भी पैरों पर। पैड्स पर तो करण जैसे बल्लेबाज आसानी से कभी भी 1 रन ज्यादा ले सकते हैं। देखिए ये अच्छी गेंद है, बढ़िया फ्लाइट, भारी किनारा, 1 रन। स्वीपर के क्षेत्र में गेंद गई। बढ़िया शॉट फ्लिक किया ऐसे, और क्या 4 रन होंगे। बहुत बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, हालांकि 2 रन नहीं रोक पाए। ये 50 रन पूरे होते हुए यहां पर करण जैन के अर्धशतक, बेहतरीन बल्लेबाजी। 11वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, सिर्फ 28 गेंदों पर। और ये छोटी गेंद, इसी संगतता की हम बात कर रहे थे, इस बार गेंद छोटी रख दी, पूरा मौका दिया यहां पर बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने के लिए। और ये ओवर की समाप्ति 11 ओवर के बाद 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, ये बेहतरीन डैट्स चैंपियंस कप होता हुआ और बहुत से स्पॉन्सर्स ने हमारी सहायता की है इस प्रतियोगिता में स्पॉन्सरशिप देकर। और आप देख सकते हैं कि एक से एक स्पॉन्सर्स जेएफएससी के साथ जुड़ना चाहते हैं। उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताता हूं। अभी क्रिकेट ग्राफ, जो कि बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है, मीडिया पार्टनर्स हैं। निशान शर्ट्स ने गिफ्टिंग पार्टनर्स के रूप में स्पॉन्सरशिप प्रदान की है। आइकॉनिक जुड़े हैं स्पॉन्सर्स के तौर पर गिफ्टिंग पार्टनर्स के रूप में। एज ब्लेंड न्यूट्रिशन पार्टनर्स हैं। गो जीरो गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं। स्पोर्ट्स फाउंड्री एसोसिएट पार्टनर्स हैं। मालकिस्ट गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं। बहुत ही प्रसिद्ध और चाहा जाने वाला ये कुकी बिस्किट। किडीवर्स किड्स एंटरटेनमेंट पार्टनर्स हैं। किंग्स कोलो अपैरल पार्टनर्स हैं। आरए फैशन गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं। डेजर्टिनो गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं और गैट्सबाय मेंस ग्रूमिंग पार्टनर्स हैं। तो एक से एक स्पॉन्सर इस प्रतियोगिता के साथ जुड़े हैं। और दीपक मोदगिल आ गए हैं, नए गेंदबाज, और 1 रन लिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खेलकर। ये 12वां ओवर इस पारी का और 4 विकेट गिरा लिए थे। हालांकि ये बहुत बेहतरीन साझेदारी है इन दोनों बल्लेबाजों की। एक समय 60 रन पर 4 विकेट हो गया था स्कोर। 25 रन बना चुके हैं विकास लिंगा और करण जैन एक साथ। विकास लिंगा स्ट्राइक पर, बढ़िया शॉट, बेहतरीन अंदाज, और 4 रन मिलेंगे यहाँ ऐसा लग रहा है। जी हाँ, चौका हो गया है। बहुत ही बढ़िया स्कूप खेला यहाँ पर लिंगा ने। ये देखिए क्या बेहतरीन अंदाज में ये स्कूप,
फाइन लेग की दिशा में खेला हुआ 4 रन के लिए, तारीफ करनी होगी। कोई मौका नहीं यहाँ पर किसी भी क्षेत्र रक्षक के पास। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे किस तरह से ज़बरदस्त स्कूप शॉट खेला, ये देखिए, और बेहतरीन अंदाज में 4 रन यहाँ पर अर्जित किए अपने लिए और अपने दल के लिए। 12वां ओवर इस पारी का। बढ़िया शॉट, सिर्फ 1 रन। अच्छा थ्रो स्वीपर कवर के क्षेत्र से, लेकिन रन तो एक ही मिला, ले भी एक ही रहे थे। दीपक मोडगिल की तीसरी गेंद पर 1 रन आया। 6 रन आ चुके हैं 3 गेंदों पर। अच्छे गेंदबाज हैं, बढ़िया क्षेत्र रक्षण किया आज इन्होंने, बहुत रन बचाए हैं आज क्षेत्र रक्षक के रूप में। और अब गेंदबाज के तौर पे क्या विकेट लेते हैं ये देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। एक रन लिए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलकर। और ये 4 रन, जबरदस्त शॉट, कोई भी क्षेत्र रक्षक नहीं था। और थोड़ा सा यहां पर तेजी से अगर भागते तो शायद रोक सकते थे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक, लेकिन दीपक मोदगिल खुश नहीं इस तरह के प्रयास से। आसानी से ये 4 रन चला गया ऐसा प्रतीत हुआ। फिर से आपको दिखाएंगे कैसे गया ये चौका। करण जैन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 रन के लिए इस गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सीमा रेखा के पार। और ये हवा में खेला हुआ शॉट, लेकिन क्या ये कैच होंगे? जी नहीं, 1 रन सिर्फ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। बढ़िया शॉट। और ये ओवर की समाप्ति 12 ओवर के बाद 95 रन 4 विकेट के नुकसान पर लगभग 8 रन प्रति ओवर का रन रेट लेकर चल रहे हैं जेएनएस मस्टैंग्स। और एक विराम के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ और अब आएंगे एक बार फिर से अंग्रेजी कमेंट्री लेके आपके समक्ष। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। This is the 13th over. We're back live with English commentary. Kunal Lakhani bowling a very good third over. Just 2 of the over till now. On strike is Karan Jain. Oh, and that's a good delivery. But he's played it well. There's a fielder out there. Just a single. Waiting for a run out, but he's already home.
Dot delivery again. That's a good shot, just a single. This is the last delivery of this over, only 2 of that over. That's a wonderful piece of bowling by Lakhani. Oh, and that's a good delivery again. He's played it well, but it should just be a single. And that's the end of the 13th over. The score after 13 is 98 for 4. And we've got Deepak Mudgil coming into bowl his next over. This is his second. 98 for 4 after 13 last 7 overs remaining in this innings. On strike is Karan. Oh, that's a good delivery. He's trying to hit the big one, but missing that completely. Comes down the track, should just be a single. The deep mid wicket does well. Oh, that is swept really well. Will that be a boundary? This is a boundary. What a shot that is. Wow. Vikas Linga has brought the 100 of his team with a wonderful shot. Just have a look at that. That was not a bad delivery at all, but how well has he played that towards the deep square leg. Brilliant shot. You got to give the credit to this guy. He's such a wonderful talent. Such a wonderful shot. Brilliant. The ability to pick the ball from outside the off stump and hit it towards the deep square leg for a boundary. Mudgil going for some runs in a spell. That's a good comeback. Dot delivery. Oh, and this time he's picked it up brilliantly. Could be a big one.
is a big one. What a shot that is by Vikas Linga. He's on fire. Just have a look at that. That was in his arc, and what a shot. Huge six towards the onside once again. And Deepak Modgil, very expensive in his spell. Till now, this is just his second over. He's given a lot of runs. Brilliant stuff by Vikas Linga. Superlative batting this is. Oh, and that's a good scoop shot again. And this should be a boundary again. That is a boundary. Vikas Linga is on fire, and another boundary in this over. So very expensive over, 15 of that. And that's the end of the over. What a brilliant end to this over. 14 overs have been bowled, 113 for 4 now. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Kunal Lakhani coming into bowl his last over. This is his fourth, and he started off really well. Karan Jain, 60 or 40 now. He was at a point of time playing with a strike rate of 200, but now he's come down to 150. There's some good bowling by Kunal Lakhani in his spell. Oh, and what a delivery! He's missed that completely. Karan just pitched on a very good length and just outside that off stump line. So very well done by Lakhani once again. It's a short delivery, played well towards the sweeper cover, just a single. Vikas Linga back on strike. He's been in red hot form in the last 2 overs. All of a sudden he's 27 of just 15, taking the pressure off Karan Jain as well. So that's a really good strategy by Vikas. Oh, and that's a wide, it seems. It's not wide. It hit the pad. That's what is being singled by the umpire. Probably took the thigh on its way. Lakhani with his next delivery. Oh, and that's a good one. He's played it well, Vikas, with a straight bat and driven it to covers for just a single. And 15 for 4. This is the 15th over. He's bowled a good spell, Lakhani. Last delivery of his spell, just 2 of this over. Karan Jain on strike. Probably he's changed his bat. We could see some fireworks here. Karan Jain. Oh, and that's a good delivery. Another dot.
And that's the end of the 15th over. 115 for 4 out of 15. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Brilliant batting this by Ronak Mehta, by Vikas Linga. Ronak Mehta being hit for 2 boundaries in this over. What a shot that was on the previous delivery. And he's so good with the scoop shot. He hits it whenever he wants to. And they haven't learned their lesson, to be honest. They should have placed a fielder there. He's scooping it almost in every over. Just have a look at that. What a shot that was. The one before this one. Brilliant cut shot. We're back live. He's doing that again, and this time the wicketkeeper misses that. That's a wide down the leg side given by the umpire. Ronak doesn't seem to be happy. Probably because of the intent of the batsman to scoop that. Vikas Linga is on fire. He's on 35 at the moment. 36, I beg your pardon. 19 deliveries only he has faced. Almost a strike rate of 200 coming into for his next delivery. Oh, and that's a wonderful delivery right into the block hole. Deadly Yorker there, but he dug it out really well on that occasion. We'll show you the scoop shot now. The one which he hit towards the fine leg boundary. Just have a look at that. What a wonderful shot that is. But they should have kept a fielder. He's done that so many times in this innings. So definitely missing a trick there too. Oh, this time in the air he's pulled that nicely, but there's a fielder out there. Just a single. He's at the boundary, so no harm to the batsman, and only a single taken. So 10 already of this over. This is the 16th over.
score is 125-4. They would be eyeing definitely a 160 score. Still 26 deliveries remaining, so they can easily score 35-40 runs. And if Karan stays for long, this could well go over 175. He's such a wonderful batsman, this guy. Coming to bowl his next delivery. Oh, and that's a wide. Trying to bounce him off, but that was not even a half tracker. That's a big wide, and the first bouncer for the over signaled as well. Oh, he's got him. He has cleaned him up. Ronak Mehta gets a very important wicket at the very crucial moment in this match when he's played it on. Karan Jain, he's played such a wonderful knock, but a brilliant piece of bowling and a very soft dismissal, to be honest. It was a good delivery, a slower one, and it hit the upper part of the bat and rolled on to hit the stumps. So 61 runs scored by Karan Jain. He's going back to the pavilion. The 16th over has been bowled. It was an expensive over till the last delivery. Karan Jain plays a wonderful knock and goes back to the pavilion. 61 of just 45. We'll take a quick break and be back soon. Last 4 overs remaining in this first inning. Stay tuned, viewers. Oh, and he's gone! A wonderful catch taken by Deepak Modgil. He's been brilliant on the field. Ritesh Balani coming into bowl his next over. That's a wonderful start. Just trying to hit a big one there. Vikas Linga on that occasion.
missing it completely. So 2 big wickets falling in the span of 2 deliveries. He's played a wonderful knock, 37 of 21. We'll show you the replay once again. Ritesh gets his second. But what a wonderful catch by Mudgil there. Just have a look at that. Credit goes to the fielder. Not easy, those catches. They come so quickly. He's done it so well. That's the 6th wicket down, 126 for 6 and 2 big wickets falling. That's a good start by Jns Shah, the new batsman. Takes a single, plays it well towards the long on. That's a good delivery again. Another dot. Just have a look at that. Was trying to hit the big one, but a good slow delivery by Ritesh. Oh, and this time a full toss. Played well towards this deep square leg. And should be a single. Oh, and that's a no ball as well. So this will be a free hit. Oh, that's a wonderful delivery again. Ritesh is on fire. Another dot, and he's done really well in this over. That's a good shot towards the long off. Should just be a single. Will they come back for the second? He's coming back for the second, but his partner says no, just a single. Oh, and that's a good delivery. Just a dot, a single there, not a dot delivery. That's the end of a very good over. Just 5 of that over, and Ritesh completes his 3rd over. He's taken a very important wicket in that over in the form of Vikas Ling. And the score after 17 is 131 for 6. They've lost the plot slightly in the last 2-3 overs. They could have scored a 160 easily. Only 3 overs remaining. So Jns Shah and Vikas Arora have a lot
to do in the last 18 deliveries that they have in their kitty, and we'll be back with the break, and we'll be back with the Hindi commentary. Stay tuned, viewers. We'll be right back. We're back live, and allow us to switch to the Hindi commentary now for the last 3 overs. रौनक मेहता आए गेंदबाजी करने. और इस शुरुआत अच्छी, सिर्फ 1 रन दिया पहली गेंद पर. बड़े शॉट्स खेलने होंगे यहां पर. केयूर शाह स्ट्राइक पर. विकास अरोड़ा और केयूर को कोशिश करनी होगी, प्रयत्न करना होगा कि 160 के ऊपर ले जाएं स्कोर. आखिरी कुछ ओवर्स में ये वाइड गेंद और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, और हर रन बड़ा कीमती यहां पर. तो गेंदबाजों को भी ध्यान रखना होगा कि अंतिम कुछ ओवरों में जितनी डॉट गेंदें हो सकती हैं वो डालने का प्रयत्न करें, और वाइड तो कम से कम ना दें. नो बॉलर वाइड. बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक के पास. 1 रन तेजी से लिया दीपक मोडगिल. बेहतरीन क्षेत्र रक्षक, लेकिन एक बार में पकड़ लेते अगर इस बार तो शायद रनआउट का एक मौका बन जाता. पहली बार में गेंद हाथ में नहीं आई, दुर्भाग्यपूर्णवश. रौनक मेहता की अगली गेंद. मस्टैंग्स 134 पर 6. 15 गेंदें अभी भी बची हैं. कोशिश करना चाहेंगे कि कम से कम 160 तो पहुंचे यहां पर. हालांकि गेंदबाजी अच्छी हो रही है. रौनक की अगली गेंद. बड़ा शॉट, ये जबरदस्त प्रहार, और क्या ये छक्का है? ऐसा लग रहा है कि 4 रन है ये. बहुत ही बेहतरीन शॉट था. देखिए क्या जबरदस्त अंदाज में इसे. फिर से देखते हैं, स्लो मोशन में देखते हैं, लेकिन बेहतरीन शॉट था विकास अरोड़ा के बल्ले से. जी हां, बड़ा छक्का है ये. जबरदस्त प्रहार 6 रन के लिए. तारीफ करनी होगी यहां पर विकास की. ऊपर की गेंद. और ये क्लीन बॉल, क्या वापसी है. जबरदस्त गेंदबाजी रौनक मेहता का. ये तीसरा विकेट. विकास अरोड़ा इस बार चूक गए. सीधे बल्ले से खेलते तो बच जाते, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अक्रॉस द लाइन खेलने गए, और यहां पर विकेटों के बीच में गेंद डाली, और जबरदस्त गेंदबाजी रौनक के द्वारा. और ये 7वां विकेट गिरता हुआ. फिर से आपको दिखाएंगे किस तरह से ये मिडिल स्टंप उखाड़ दिया यहां पर जड़ से. ये देखिए बेहतरीन गेंदबाजी. और इस 7 विकेट गिरते हुए जिन्स मस्टैंग्स के विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ. बने रहिए हमारे साथ. धन्यवाद.
और इस ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी गेंदबाजी। डॉट गेंद से यहां पर समापन किया इस ओवर का। 140 पर 7, 18 ओवर के बाद आखिरी 12 गेंदें बची हैं और एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। उन्नीसवें ओवर की शुरुआत होने वाली है। 140 पर 7 हो गया स्कोर। बड़ा छक्का लगाया था पिछले ओवर में, लेकिन उसके बाद आउट हो गए विकास अरोड़ा। रितेश आए और बेहतरीन बाउंसर यहां पर इनका आखिरी ओवर है। लेकिन क्या जबरदस्त शुरुआत, और केयूर शाह को बाउंस कराया, वहां पर उछाल लिया इस विकेट से। देखिए जबरदस्त छोटी गेंद, और ये हेलमेट पर जाकर लगी। बहुत ही उच्च स्तरीय बाउंसर, ये बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं, तारीफ करनी होगी। अगली गेंद और ये क्लीन बोल्ड, बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही आला गेंदबाजी यहां पर, उच्च स्तरीय। जी हां, इस बार स्लोअर गेंद डाली है, देखिए लेग कटर। और केयूर शाह चूक गए यहां पर पूरी तरीके से, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम। बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं ये, हमने कई और प्रतियोगिताओं में भी देखा है किस तरह से छकाते हैं बल्लेबाजों को। और जिसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि पहले सॉफन अप किया बाउंसर डाल के, और उसके बाद क्या जबरदस्त अंदाज में लेग कटर डाल के आउट कर दिया। और एक विराम के बाद वापस मिलेंगे आपके साथ। 8वां विकेट गिरता हुआ मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद। बेहतरीन गेंदबाजी, नए बल्लेबाज श्रेयस देसाई पूरी तरीके से चूक गए उस गेंद पर। पहली गेंद थी इनकी, और रितेश की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। क्या जबरदस्त गेंदबाज है, देखिए किस तरह से आउट किया, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। बेहतरीन लेग कटर, इसे कहते हैं छका देना पूरी तरीके से, वही किया पिछली गेंद पर। और ये भारी किनारा, क्या 2 रन के लिए आएंगे? जी हाँ, आसानी से आ जाएंगे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन मिल गए। अपना खाता खोलते हुए 2 रन से थर्ड मैन की दिशा में खेलकर 142 पर 8 हो गया है स्कोर। पिछले 3-4 ओवर में बहुत ज्यादा विकेट्स खो दिए। जी हाँ, एक समय लग रहा था कि 160-70 तो आराम से बन जाएंगे। 125 पर 4 था स्कोर। पिछले 2-3 ओवरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है बल्लेबाजी क्रम में। 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। और गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, खास करके रितेश और रौनक की। ये देखिए एक और धीमी गेंद, धीमी गति से यहां पर चकमा देने का प्रयास, लेकिन इस बार अच्छा शॉट खेला, तैयार थे श्रेयस पहले से।
इस तरह की गेंदबाजी के लिए हितेश पटेल आए हैं स्ट्राइक पर। एक गेंद खेली इन्होंने और अभी तक खाता नहीं खोला है। और रितेश बलानी ने 3 विकेट लिए। इनका आखिरी ओवर है अपने स्पेल का और आखिरी गेंद भी। और ये डॉट गेंद 1 रन से समाप्ति इनके स्पेल की। 19 ओवर के बाद 144 रन 8 विकेट के नुकसान पर रितेश का बेहतरीन स्पेल। और आखिरी 6 गेंदें बची हैं और तारीफ करनी होगी यहां पर उत्पल ग्लैडिएटर्स की, जिस तरह से रोका है इन्होंने स्कोर को। आदित्य वगेरिया आ गए अपना आखिरी ओवर डालने। बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बाएं हत्था फिरकी गेंदबाज। और ये क्लीन बोल्ड पहली गेंद पर। जी हाँ, यही खासियत है इनकी, आसान नहीं है इनको खेलना। एक समय हैट्रिक पर थे इसी मैच में। जबरदस्त गेंदबाजी और ये तीसरा विकेट गिरता हुआ। नवा विकेट यहां पर जेनस मस्टैंग्स का गिरता हुआ। आदित्य वागेरिया का तीसरा विकेट। इनका चौथा ओवर है, स्पेल का आखिरी ओवर और पारी का भी आखिरी ओवर है। और क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएंगे, अब ये देखना है। मस्टैंग्स यहां पर काफी दुविधा में, बहुत ज्यादा मुश्किल में है। 9 विकेट गिर गए हैं और अभी भी 5 गेंदें बची हैं पारी में। तो पहला कार्य तो होगा कि 20 ओवर खेलें पूरे। और ऐसा लग नहीं रहा था जब 125 रन थे 4 विकेट के नुकसान पर, 144 पर 9 हो जाएगा स्कोर। लेकिन तारीफ करनी होगी यहां पर उत्पल ग्लैडिएटर्स के जबरदस्त गेंदबाजों की। पिछले 5 विकेट तो 20 रन के अंदर ले लिए हैं। एक तरह से समेट दिया है इस पारी को। ऐसा लग रहा था 160-65 तो आराम से हो जाएगा स्कोर, लेकिन अब तो 150 होगा कि नहीं ये भी कहना मुश्किल है, जिस तरह से आदित्य गेंदबाजी कर रहे हैं। निशित गांधी आए हैं नए बल्लेबाज और आखिरी इस क्रम में बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले से खेला हुआ बेहतरीन शॉट। लॉन्ग ऑन पर 1 ही रन लिया, दूसरे के लिए आ सकते थे लेकिन खतरा ना ही लेना इस समय सही निर्णय। लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन लिया और 3 गेंदें बची हैं इस आखिरी ओवर में और इनके स्पेल में भी। और इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए हैं। तो बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर आदित्य वागेरिया के द्वारा। स्ट्राइक पर एक बार फिर से निशित, और ये बल्ले का किनारा और ये यहां पर चूक हो गई। 4 रन के लिए गेंद चली गई। लचर क्षेत्ररक्षण, 1-1 रन की बहुत ज्यादा यहां पर जरूरत। मस्टैंग्स को इस बार मिल भी गया चौका। जी नहीं, ये बेहतर हो सकता था। और 150 रन पूरे हुए इसी चौके के साथ। जी हां, 2 गेंदें बची हैं और निशित गांधी बल्ला नहीं लगा था, बाय का इशारा अंपायर का। तो निशित गांधी अभी भी 1 पर ही, विकेट कीपर से चूक हुई और उसके बाद क्षेत्ररक्षक से भी। तो 4 रन यहां पर उपहार स्वरूप दे दिए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हालांकि 1 ही रन होगा, क्षेत्ररक्षक है वहां पर।
लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। बढ़िया थ्रो, अगर दूसरा रन लेते तो यहाँ पर आउट हो सकते थे। और आखिरी गेंद 151 रन हो गया स्कोर। तारीफ करनी होगी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की। एक मनोवैज्ञानिक जो स्कोर होता है 150 का, उसके आगे ले आए अपने दल को। और आखिरी गेंद इस आखिरी ओवर की पहली पारी में, और ये आउट हो गए हैं। बेहतरीन विकेट कीपिंग, स्टंप आउट किया और चौथा विकेट यहां पर मिलता हुआ आदित्य वागेरिया को। और ये देखिए किस तरह से आउट किया, तेज गेंद डाली और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास यहां पर, लेकिन श्रेयस देसाई चूक गए। और 151 पर 20 ओवरों में पूरी टीम सिमटती हुई, और आदित्य के 4 विकेट और बेहतरीन गेंदबाजी। 152 का लक्ष्य दिया यहां पर जेनस मस्टैंग्स ने उत्पल ग्लैडिएटर्स को। और करीब 10 मिनट के बाद आपके साथ वापस जुड़ेंगे इस मैच की दूसरी पारी में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।
And we are back live with the second innings here. This is the commentator Shalin Gupta welcoming all the viewers and spectators once again. This is the first match in the Darts Champions Cup organized by the Jolly Friends Super Sports Club, the Jfsc. Such a wonderful team of event organizing these guys are. And the Jns Mustangs have scored 151. And the Utpal Gladdiators have started well. The first delivery, a dot. Good delivery by Hitesh Patel, the left arm pacer. They have to score 152 to win this match, Utpal Gladiators. And Deepak Modgil and Sunny Nagpal, the captain of the team, are the opening pair. That's a good shot. Should be the first runs on the board. And he's off the mark with a good shot, Deepak Modgil. Slight misfield as well, allowing the batsman to open his account. Hitesh coming into bowl. His next delivery is a wonderful paceman. Oh, and what a delivery! Wow. They're appealing for a caught behind, but was their bat? Doesn't seem so. We'll have to look at the replay. Oh, and what a peach of a delivery, but honestly no bat involved on that occasion. We'll have a look in the slow-mo as well. Oh, and that just took off once it landed. That's a wonderful delivery once again, just taking it away from the left-handed batsman. But that's a good leave as well. Sunny Nagpal, the captain, is on strike. A wonderful batsman, this guy. Trying to hit the big one, misses that completely on that occasion. That's a dot delivery again. Sunny Nagpal. He's shown his intentions pretty clear out here. He's not going to wait for the loose delivery. Oh, and that's a good one by Hitesh Patel. That's the end of a very good over, just one of the over. And the left armer has started off brilliantly. He lets it go on that occasion, Sunny. That was a good delivery, so he gave the due respect. It was the right way to do it. That's the end of the first over, one without loss, and we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned. Coming into bowl, the first over for his spell, and this is just the second of the over. Keyur Shah, the left arm pacer. Oh, and he's played it well, Deepak, but there's no run as there's a fielder out there, the square leg region. 152 is the target. Keyur Shah, another left arm pacer, starting with the new ball along with Hitesh. Oh, and he's cleaned him up. What a delivery. Absolutely stunning bit of bowling. Just have a look at that line that he's bowled on that occasion, and it
Came back into the right-hander. Should have played with the straight bat. Deepak Modgil's completely stunned there. What a delivery. And the first wicket down on the score of just 1.2 overs and 1 for 1. Oh, and that's definitely a wicket taking delivery. Deserved every bit of that. Keyur Shah starts off brilliantly and gives a breakthrough to his team. Strikes early. Just the second delivery of his spell. We show you the replay once again. What a peach of a delivery. He had no answers to that. Brilliant. The off stump uprooted. And that's the end of a small and short innings. Deepak Modgil scored just 1. There's a new batsman on strike. Some high quality bowling in the first 2 overs. Keyur getting an important wicket. Sandeep Jajo is the new batsman. Another right-hander coming into bat. Oh, another wonderful delivery. Has he got him? Seems no, but what a delivery. First up, just have a look at that. Couldn't be a better delivery to start. Oh, and that was very close to the edge. That was a good decision by the umpire. There was no edge there. Stunning bowling by Keyur Shah. He's right on the money there. And that's a wide down the leg side. That's the first delivery that is not bowled in line in this over. 2 for 1. But Gladiators starting off pretty conservatively here. Oh, and that's a good shot. Straight to the fielder. Does really well. They've taken a quick single. Very good running between the wickets as well. He's off the mark right away. Sandeep Jaju not wasting too much time. And Sunny Nagpal back on strike. Sunny on strike. Here is his next delivery. Oh, and that's a big wide down the leg side. Not at all a good delivery. A poor one indeed. So 2 extras given in this over. Need to be slightly disciplined here. The paceman. Oh, and this time he's played it well towards the deep point, deep backward point. Does well, just a single though. The fielder from the third man came all the way to the deep backward point. Allowed only a single. That was such a wonderful stop by the fielder. This is the second over and the last delivery of this over. Keyur Shah has bowled a wonderful first over, just 4 of the over till now. He's given a couple of wides. Can he come back with another wicket? Oh, and that's edged. Did not take that single. And that's the end of the second over. 5 for 1 after 2. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
Oh, and that's edge, and they've dropped it. Not only the keep. Oh, that's a good throw. Should have been caught. Just have a look at that. That was edged, and first the wicketkeeper and then the first slip. Both dropped it. Should have been taken by at least one of them, Hitesh Patel. Coming back really well after the boundary was scored on the first delivery. That was such a wonderful comeback. Could have been a wicket. Sunny Nagpal gets a life on that occasion. Oh, and that's a wonderful shot, a full toss. One bounce into the fence in the deep square leg region. That was not a good delivery. A full toss and punished wonderfully well. That did deserve that treatment. Sandeep Jajo coming into the act. This is his first boundary. So 9 of the over till now. Just 3 deliveries have been bowled. Oh, and this time he's come back nicely, bowling it in the right channel outside that off stump line. Good shot, but straight to the fielder. Good work there by the fielder at covers. Oh, and that is played nicely. Should be a boundary again. Wonderfully played. Just have a look at that. That was cut brilliantly. Quite a full delivery to cut, but some real good hand-eye coordination by Sandeep Jajo. Once again, he's on fire, this guy. And an expensive over coming to an end. 18 for 1 after 3. Run rate 6 runs per over now. 13 of that over. KU coming to bowl his second over. KU Shah. Short delivery is played it well. Should be a boundary. There's no one stopping that. A sweeper cover fielder, just a spectator. That was a poor delivery. A half tracker, and that too way outside that off stump, allowing the batsman to free his arms easily. Plays it in the gap and gets a boundary in the deep point region. And length is the key here. They will have to be really focused on the length. That's a good delivery. The length way better than the previous one this time. Tries to cut that, misses that again. Sunny Nagpal, he's come back nicely. Took his time initially. Right now 10 of 8 deliveries, 2 wonderful boundaries in the previous over and this over as well, 1. Oh, another wide delivery. He's reached out to that, just a single. Could have been a wide if he would have decided not to play at that.
Oh, what a delivery! Wow, that was a peach. Just have a look at that. You had no idea about that. Oh, and that's a Jaffa. You've got to be kidding me. What a delivery. You don't often get to see such deliveries. Really high quality stuff by Keyur Shah, but he needs to be consistent, which is the key here. They need to keep bowling that length. Oh, in the air this time, but in the gap, and this will be a boundary again. He's playing a wonderful innings out here, Sandeep Jajo. Picked it up nicely. That was a short delivery again. That is what we were mentioning. They need to be consistent with the length. He's picked it up really well and played it brilliantly towards the deep square leg for a boundary. Sandeep Jajo is on fire. He's a very sensible batsman, this guy. Not leaving any opportunity to score when there is a poor delivery by the bowler. And that's the sign of a very good batsman. Not leaving poor deliveries, maximizing them for runs. That's what he's been doing in his short innings till now. 13 of 9. That's a good delivery, good comeback, but very well played by Jajo as well. And that's the end of the fourth over. The score is 27 for 1. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned. Oh, and that's a full toss. And that's edged, but just a single. There's a fielder out there at the third man boundary. Coming into bowl his third over, Hitesh Patel. Oh, and that's a good delivery. He's played it well. Waited till the end. That's a good strategy by Jajo. Not playing the shots in a hurry. Just waiting, assessing the length, and then playing his shot. That's a good delivery. On a quick single this time. They're running really well. Sunny Nagpal back on strike.
Another dot and good comeback by Hitesh once again. He was expensive in his previous over, but this one he's come back nicely. Just 2 of the over till now. Last delivery coming up in this over. Oh, and what a shot! And that's a 6. Wow! Flat 6 straight down the ground. He spoiled the entire over. Just have a look at that. What a bottom hand he's got. Flat 6. You've got to be kidding me. What a shot. We haven't seen such a shot. In quite some time on this ground. You've seen a lot of 6s. Big hits, but such a flat 6 and that too straight down the ground. This is some special hitting. Just have a look at that. A full toss. He did not have the control on that occasion and had to pay a price. Pick 6. That's the end of the 5th over. 35 for 1. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned. Vikas Linga, the new bowler, being brought into the attack, and what a shot by the captain, Sunny Nagpal, on the last delivery. A flat 6 straight down the ground over the bowler's head. And on strike is Sandeep Jajo. That's a good delivery by Vikas. First one in this over and spell. Oh, that's a wonderful shot. There's a fielder out there, just a single though. That was a good shot towards the sweeper cover. Oh, and that's a big shot. Will be a boundary. That was pitched up, and just have a look at how he frees his arms. That's a good delivery, good comeback, and a quick single taken. That's a really good piece of running. Just have a look at that replay once again. Played brilliantly
into the air and into the covers boundary. One bounce in the fence. What a shot that was by Utpal. This time coming in for the second, but satisfied with a single, and that's the end of Vikas Linga's first over. The score is 6 overs 43 for 1. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. We'll be back with the Hindi commentary now. Be right back. Stay tuned. ओवन ये 4 रन हो जाएगा ऐसा लग रहा है जी। नहीं, 2 रन के लिए वापस आ गए। नीरज परब आए हैं नए गेंदबाज। बढ़िया कट शॉट था और हिंदी कमेंट्री लेकर एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर चूक हो गई। और ये आउट। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और बड़ा विकेट मिला यहां पर। क्या बेहतरीन कैच और जबरदस्त कैच, तारीफ करनी होगी। आसान नहीं था, सीमा रेखा से कुछ इंच अंदर ही लिया है कैच। जी हां, बहुत जबरदस्त कैच यहां पर, डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर। नीरज परब ने आते ही एक विकेट चटका दिया है और 45 पर 2 हो गया स्कोर। बड़ा विकेट गिरता हुआ संदीप जाजो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पेविलियन जाना पड़ेगा वापस। 45 पर 2, एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। बल्लेबाज निखिल जैन और आते ही 1 रन लिया निखिल ने।
कप्तान सनी स्ट्राइक पर, अच्छी फ्लाइटेड गेंद लेकिन बढ़िया शॉट 1 रन के लिए लॉन्ग ऑफ की दिशा में। हितेश पटेल मौजूद, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन। हवा में खेला हुआ बड़ा शॉट और ये आउट। एक और विकेट इसी ओवर में और ये मैच बदलने वाला ओवर साबित हो रहा है। निखिल जैन आते ही पेविलियन की तरफ वापस जाते हुए 1 ही रन बना पाए। बढ़िया कैच। 47 पर 3 हो गया स्कोर। तारीफ करनी होगी यहां पर नीरज परब की, यहां पर लालच दिया बड़ा शॉट का और कैच करवा दिया। ये देखिए बेहतरीन गेंदबाजी में कहूंगा इसे, और बढ़िया कैचिंग की है यहां पर जेनस मस्टैंग्स के खिलाड़ियों ने। दोनों ही कैच बहुत अच्छे, पिछला वाला तो बहुत ही जबरदस्त था और ये भी बहुत अच्छा कैच। 47 पर 3 हो गया स्कोर। देखते देखते थोड़ा सा यहां मुश्किल में आ गए हैं उत्पल ग्लैडिएटर्स। इसी ओवर में 2 विकेट गिर गए और वो भी संदीप जाजो और निखिल जैन जैसे बल्लेबाजों के विकेट। बेहतरीन खिलाड़ी हैं दोनों, लेकिन दोनों पेविलियन में। नीरज परब की 1 गेंद अभी भी बची है। यतिन मोरा नए बल्लेबाज और डॉट गेंद से शुरुआत। अच्छा शॉट लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक के पास। हर्ष गांधी कवर्स पर मौजूद थे और ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे। आपके साथ बन रही है, मैं से धन्यवाद। कप्तान विशाल मजूमदार आ गए हैं गेंदबाजी डालने। बढ़िया गेंदबाजी। गेंद को छोड़ने की सोच रहे थे लेकिन इतना घुमाव हुआ गेंद में कि उसे खेलने पर मजबूर हो गए बल्लेबाज। बेहतरीन गेंदबाजी। और ये वाइड गेंद लेग स्टंप के बाहर, ये वाइड और 1 रन अतिरिक्त जुड़ता हुआ स्कोर में। और एक और वाइड लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। एक बार फिर से विशाल दिशाहीन गेंदबाजी डालते हुए।
1 रन इस बार आसानी से ले लिया। अच्छा शॉट लीव्स को लेकर दिशा में खेला यतिन मोरा ने और अपना खाता खोला यहाँ पर। 50 रन पूरे हो चुके हैं 8वें ओवर में। 51 पर 3 है स्कोर। 101 रनों की आवश्यकता 12.2 ओवरों में। 74 गेंदें और 101 रन। सनी नागपाल जब तक है तब तक आसानी से ये स्कोर बन सकता है। हालांकि अगर विकेट गिरे 1-2 और तो मुश्किल हो सकती है। अच्छी गेंदबाजी विशाल के द्वारा। और यहाँ पर 1 रन लिया तेजी से। बेहतरीन गेंदबाजी नीरज परब की। एक बार फिर से दूसरे ओवर को लेकर आए अपने। 2 विकेट पहले ले चुके हैं सनी। उनके 4 ओवर 1 भी रन नहीं। डॉट गेंद सीधे कवर्स की दिशा में खेला क्षेत्र रक्षक के हाथों में। और ये वाइड इस बार। दिशाहीन गेंदबाजी। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। अच्छी गेंदबाजी इस बार। बढ़िया वापसी। तो वापसी बहुत अच्छी कर रहे हैं। बढ़िया शॉट कट किया ऐसे। और 1 रन लिया पॉइंट के क्षेत्र में। बहुत ही बढ़िया ओवर है ये। नीरज परब और ये बहुत ही खराब गेंद। ये तेज गेंद डालने के प्रयास में यहां पर 5 अतिरिक्त रन दे दिए। जी हाँ, लचर गेंदबाजी है और इनसे तो ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकते। देखिए क्या कर रहे थे ये। जरूरत ही नहीं थी इसकी। आप स्पिनर हो, आप बेहतरीन गेंदबाजी डाल रहे हो, आपने 2 विकेट लिए हैं और उसके बाद आप इस तरह की लचर गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाजी करने वाली टीम का मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ 5 रन उपहार स्वरूप दे दिए यहाँ पर वाइड के रूप में। ये देखिए वापस आप लेग स्पिन पर ही आ गए। तो वो गेंद की कोई खास आवश्यकता नहीं थी। समझ तो गए होंगे गेंदबाज भी। इस बार 1 रन लिया कट करके स्वीपर कवर के क्षेत्र में।
बिना वजह 5 रन दे दिए यहाँ पर। बहुत अच्छा दबाव बना रहे थे अपनी गेंदबाजी से, लेकिन इस ओवर में 8 रन चले गए। आगे बढ़कर बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, 1 रन मिलेगा आसानी से। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 9 ओवर के बाद 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। निशित गांधी को गेंद थमाई गई और शुरुआत वाइड से, लेग स्टंप के बाहर ही गेंद, और 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर में 62 पर 3 हो गया है स्कोर 9 ओवर के बाद। आसानी से खेल दिया उसे फाइनल की दिशा में 1 रन के लिए। ये गेंद भी लेग स्टंप पर ही थी, तो दिशा बदलनी होगी बाएं हत्था बल्लेबाज के विरुद्ध निशित गांधी को। एक और वाइड गेंद लेग स्टंप के बाहर डालते हुए, तो बाएं हत्था बल्लेबाज को भी वाइड डाल रहे हैं लेग स्टंप के बाहर, और अब दाएं हत्था बल्लेबाज आ गया तो भी दिशाहीन गेंदबाजी। तो कप्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी है अगर ये अतिरिक्त रन नहीं रोकते हैं तो। और ये अच्छी वापसी, 1 ही रन स्वीपर पर, अच्छा कट शॉट। और ये बेहतरीन शॉट, क्या ड्राइव है 4 रन के लिए कवर्स के क्षेत्र में। कोई मौका नहीं यहां पर क्षेत्ररक्षक के पास,
गैप में खेला वो शॉट बेहतरीन, हालांकि थोड़ा बेहतर प्रयास हो सकता था। सनी नागपाल क्या बल्लेबाज हैं, जबरदस्त कप्तान भी। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, और ये वाइड गेंद, एक और वाइड, तो 70 रन हो गया स्कोर। लगभग जितने रन गति से रन बन रहे हैं उसी रन गति से रन चाहिए भी। सिर्फ 82 रन चाहिए मैच को अपने कब्जे में करने के लिए 63 गेंदों पर। एक और डॉट गेंद, और इस बार शायद लेग बाय होंगे। 2 रन हो गए हैं। देखना है कि बल्ला लगाया, थाई लगाया। जी हाँ, थाई गार्ड लगा था और 2 रन लेग बाय के मिल गए यहाँ पर फाइन लेग की दिशा में। अभी भी दिशा जो है गेंदबाज के तरफ से बहुत अच्छी नहीं है। सारी गेंदें लेग स्टंप पर ही डाल रहे हैं लगभग। इनका पहला ओवर है लेकिन काफी महंगा ओवर। आखिरी गेंद और ये अच्छी गेंद, 1 रन लिया तेजी से भागकर, और 10 ओवर के बाद स्कोर 73 रन। एक और रन मिल जाएगा यहाँ ओवर थ्रो का। बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और 74 रन हो गया स्कोर 10 ओवर के बाद। तो 10 ओवर में अब 78 रनों की आवश्यकता, और ड्रिंक्स ब्रेक का यहाँ पर निर्देश अंपायरों का। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से वापस आ गए आप सभी दर्शकों के साथ जुड़ने। दस ओवर में स्कोर है 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और विशाल मजूमदार कप्तान एक बार फिर से आए हैं अपना अगला ओवर डालने। इनका दूसरा ओवर, बहुत ही कांटे का मुकाबला होता हुआ 10 ओवर में 78 रनों की आवश्यकता। तो 7.4 का अभी रन प्रति ओवर औसत है और 7.8 की गति से रन बनाने हैं। तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर सनी नागपाल की, खास करके डटे हुए हैं, कप्तानी पारी खेल रहे हैं क्रीज पर। चौहत्तर पर 3 है 10 ओवर में स्कोर। और ये बेहतरीन शुरुआत इस ओवर की, फ्लाइटेड गेंद। यतिन मोरा ने उसे सीधा खेला, लेकिन संभल कर खेलना होगा, विकेट ना गंवा दें कहीं। अरे बढ़िया, एक रन लिया आसानी से। स्क्वायर लेग की तरफ खेल के जाते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी। और सनी वापस स्ट्राइक पर। बेहतरीन शॉट, क्या ये 6 रन है? बड़ा छक्का है ये। जी हाँ, इसके तो 8-10 रन मिलने चाहिए। इस तरह का शॉट है, बड़ा छक्का है। देखिए डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, और क्या पिक किया है ऑफ स्टंप के बाहर से। बहुत ही लंबा और बड़ा छक्का ये, कप्तान सनी नागपाल के बल्ले से। जबरदस्त प्रहार 6 रन के लिए। 41 पर आ गए सनी। और एक और खराब गेंद, फुल टॉस गेंद को और जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, तारीफ करनी होगी। बेहतरीन शॉट था, लेकिन क्या क्षेत्ररक्षण है। जी हां, पूरा मौका था यहां पर एक बड़ा शॉट लगाने का, चूक गए। और जबरदस्त क्षेत्ररक्षण यहां पर हर्ष गांधी का, डीप स्क्वायर लेग की सीमा रेखा के पास। और ये अच्छी वापसी, फ्लाइटेड गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास यतिन मोरा का, चूक गए। विशाल की दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, 8 रन बन चुके हैं इस ओवर में। एक बड़ा शॉट लगेगा तो महंगा ओवर हो जाएगा ये। खराब गेंद, और ये वाइड गेंद है, और शायद यहां पर 4 भी मिल जाएंगे वाइड के। जी हाँ, 5 अतिरिक्त रन। खराब गेंदबाजी, ये देखिए एक्सटम की कितनी बाहर ये गेंद। रन बचाने के प्रयास में कभी कभी गेंदबाज लंबाई कम कर देता है गेंद की, और यही किया इस बार विशाल ने। और यहां पर ये विफल हुआ परीक्षण। फ्लाइटेड गेंद ही डालते तो भी चल जाता, बल्ले से रन आते हैं तो कोई भी कप्तान उस चीज को ज्यादा अहमियत देगा। अगर वाइड के रन आ जाते हैं तो इस बार तो 5 रन आ गए, और अच्छी वापसी, डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति, लेकिन महंगा ओवर। 87 पर 3 11 ओवर के बाद सिर्फ 54 गेंदों पर 65 रनों की दरकार। 9 ओवर बचे हैं, 65 रन चाहिए, 7 विकेट बचे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए यहां पर, खास करके जब तक सनी नागपाल हैं।
और बेहतरीन शॉट, 6 रन, बड़ा छक्का। ये क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, तारीफ करनी होगी। ऑफ स्टंप के बाहर से क्या खींचते हैं गेंद को, और डीप मिड विकेट पर बड़ा छक्का सनी नागपाल के बल्ले से। एक बार फिर से विकास लिंगा की कि दूसरे ओवर की पहली गेंद, क्या शॉट था। फिर से आपको दिखाएंगे रिप्ले। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या पिकअप है, तारीफ करनी पड़ेगी। 48 पर आ गए 35 गेंदों के बाद, और स्कोर पहुंच गया 93 रन देखते ही देखते। 53 गेंदों पर सिर्फ 59 रनों की दरकार। ये मैच अगर सनी नागपाल अगले 4-5 ओवर खड़े रह गए तो पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगा। अभी भी पलड़ा उत्पल ग्लैडिएटर्स का ये भारी है। जिनेस मस्टैंग्स को यहाँ पर 2 विकेट लेने ही होंगे बड़ी जल्दी, इस मैच में वापसी करनी है। और ये बहुत ज़्यादा घूम गई गेंद, लेग स्टंप के बाहर वाइड गेंद। 94 रन हो गया स्कोर। और एक और वाइड गेंद, यहां पर पूरी तरह से दिशा से चूक गए हैं गेंदबाज। जी हां, दिशाहीन गेंदबाजी, 2 वाइड गेंदें छक्के के बाद, दबाव भी है। पहली गेंद पर ही छक्का खा गए और ये छोटी गेंद डाल दी है। और ये खराब क्षेत्र रक्षण, और इनका अर्धशतक पूरा। बेहतरीन बल्लेबाजी, लेकिन ये बहुत ही लचर क्षेत्र रक्षण, और एक बढ़िया अर्धशतक पूरा होता हुआ यहां पर कप्तान सनी नागपाल का। हालांकि एक बार फिर से आपको रिप्ले दिखाएंगे, ये गेंद रुक सकती थी। लचरता दिखी क्षेत्र रक्षण में, और वो भी हर्ष गांधी ऐसे खिलाड़ी से छूटी है तो दबाव पूरे दल पर है। बढ़िया शॉट, गैप में जबरदस्त प्रहार, 4 रन। क्या बल्लेबाज हैं ये, और अपने दल के 100 रन भी पूरे कराए इस बेहतरीन पंच से, जो कवर्स की दिशा में खेला इन्होंने। जबरदस्त शॉट। बेहतरीन शॉट, और एक टिप्पा और 4 रन। क्या बल्लेबाजी है, और सनी नागपाल ताबड़तोड़ फॉर्म में। ये देखिए छोटी गेंद को क्या मारा है एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में, डीप एक्स्ट्रा कवर्स की सीमा रेखा के पार, 4 रन। और 107 हो गया स्कोर देखते देखते। सिर्फ 45 रनों की दरकार, इस मैच को एक तरफा बना दिया है सनी नागपाल के बल्ले ने। आसानी से खेल लिया उसे, लेकिन एक भी रन नहीं। और ओवर की यहां पर समाप्ति होने में 1 गेंद बची है। अच्छा कट शॉट खेला और 1 रन लिया। ओवर की समाप्ति यहां पर 12 ओवर में 108 रन, 9 रन प्रति ओवर का हो गया है रन प्रति ओवर का औसत। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बन गया हमेशा। धन्यवाद।
वाइड से शुरुआत केयूर शाह, तीसरा ओवर और बहुत दबाव में आ गई है यहां पर जीनस मस्टैंग्स की गेंदबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाई है सनी नागपाल ने। वाइड नहीं थी, 1 रन यहां पर मिला, बल्ले से लगी थी गेंद, क्षमा चाहेंगे। बेहतरीन शॉट, 4 रन मिलेंगे आज यतिन मोरा को। जबरदस्त कट शॉट, पॉइंट के पास से खेला और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर। देखिए क्या बेहतरीन शॉट था। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं यहां पर। थर्ड मैन के क्षेत्र में खड़े हुए क्षेत्ररक्षक के पास 113 हो गया स्कोर। सिर्फ 39 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर रन गति बढ़ती जा रही है हर ओवर के साथ। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अब दोनों बल्लेबाज, यतिन मोरा भी अब अपने हाथ खोल रहे हैं। उनकी पहली बाउंड्री है। सनी नागपाल ने क्या बल्लेबाजी की है, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम। आगे बढ़कर आसानी से खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में और 1 रन लिया तेजी से। हल्की सी चूक भी हुई क्षेत्ररक्षक से, लेकिन नहीं भी होती तो पहुंच गए थे यतिन मोरा। आगे बढ़कर पहले ही क्रीज से अच्छे खासे आगे थे। सनी नागपाल वापस स्ट्राइक पर। 6 रन बन चुके हैं इस ओवर में 3 गेंदों पर। 54 गेंदों पर चाहिए थे। साठ से ज्यादा रन, और अब देखिए 45 गेंदों पर 38 रन चाहिए, तो पिछली 9 गेंदों पर 20-22 रन बना दिए। और केयूर की अच्छी गेंदबाजी, लेकिन यहाँ पर चूक हो गई विकेट कीपर से। 1 रन मिल गया, बाय का मिलेगा और चोट भी शायद लग गई उन्हें। आशा करते हैं कि कोई गहरी चोट ना हो ये। और ये 1 रन लिया यहां। तेज रन लेने के कारण रनआउट का यहां मौका बन सकता था, लेकिन नहीं लगी गेंद, बच गए, भाग्यशाली हैं। डॉट गेंद की ओर की अच्छी वापसी। नीरज परब आए हैं अपना अगला ओवर लेकर। वाइड से शुरुआत, बहुत अतिरिक्त रन आ रहे हैं। सारे गेंदबाज दिशाहीन होते जा रहे हैं। दबाव है ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का जो सनी नागपाल ने बनाया है। और एक और वाइड होगी है। जी हाँ, अंपायर को जरा सा भी हिचक नहीं दोनों हाथ फैलाने में। बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन अच्छा शॉट, और एक भी रन नहीं, सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथ में, पॉइंट के क्षेत्र में। अच्छा शॉट, इस बार पुल किया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा।
2 गेंदें और 3 रन बन चुके हैं इस ओवर में। स्कोर हो गया है 119 रन। सिर्फ 33 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। सनी नागपाल अगर खड़े रहे तो शायद अगले 3-4 ओवर में स्कोर बन भी जाए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 62 पर आ गए हैं सिर्फ 43 गेंदों के बाद। और ये क्लीन बॉल चूक गए यहां पर। नीरज परब की एक लालच देने वाली गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर चूक गए और क्लीन बोल्ड। जी हाँ, एक बेहतरीन पारी का अंत बहुत ही हल्के अंदाज में हुआ। और देखिए चेहरे पे हंसी है उनको पता है कि ये बड़ा शॉट यहां पर लगा सकते थे, लेकिन चूक गए। थोड़े तो निराश होंगे, लेकिन जबरदस्त बल्लेबाज और क्या पारी खेली है 62 रनों की 43 गेंदों पर। 119 पर 4 है स्कोर। 6 विकेट बचे हैं और अभी भी 33 रनों की आवश्यकता। तो क्या वापसी कर पाएंगे यहां पर जीनस मस्टैंग्स? एक महत्वपूर्ण विकेट तो ले लिया है इन्होंने और एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। और ये आउट। 2 गेंदों पर 2 विकेट। 5वां विकेट गिरता हुआ नीरज परब को 2 विकेट मिल गए फिर से। क्या जबरदस्त कैच यहां पर कवर्स के क्षेत्र में, तारीफ करनी होगी। नीरज परब का 4था विकेट और कामेश शाह आए थे नए बल्लेबाज और कोई खास योगदान नहीं दे पाया। 0 पर वापस जाते हुए, लेकिन कैच देखिए कवर्स के क्षेत्र में, फ्लैट शॉट लेकिन बेहतरीन कैच, तारीफ करनी होगी। जी हाँ, आसान नहीं होता है इस तरह के कैचेस लेना। और ये 5वां विकेट 119 पर 33 रन अभी भी चाहिए। क्या यहां पर कुछ चमत्कारिक हो सकता है? अब देखना है। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आते हुए और 4 विकेट ले चुके हैं नीरज परब। इनका तीसरा ओवर ही है, तो क्या अपना 5वां विकेट लेकर 5 पूरा कर पाएंगे? देखना है। और 2 बार ऐसा हो कि इन्होंने 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए, तो हैट्रिक पर हैं एक बार फिर से। राजेश जैन नए बल्लेबाज और देखते ही देखते ये मैच करवट ले रहा है थोड़ा थोड़ा। 119 पर 5 हो गया स्कोर। ये 14वां ओवर। नीरज परब सनी नागपाल को आउट किया पहले, पिछली गेंद पर कामेश को पेविलियन भेजा। हवा में खेला हुआ शॉट, लेकिन एक ही रन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और हैट्रिक का यह मौका गया। बेहतरीन शॉट, लेकिन जबरदस्त क्षेत्र रक्षण। वाह, तारीफ करनी होगी इस तरह के कमिटमेंट के लिए। ये देखिए क्या रोका है इन्होंने, बहुत जबरदस्त। हर्ष गांधी हैं ये
और कोई हो भी नहीं सकता, इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बल्ले से आज कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ भी मौका होता है कि कोशिश रहती है योगदान देने का अपनी दल के लिए, अपनी टीम के लिए, और इस वक्त भी वही किया। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 122 रन हो गए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ और अब वापस आएंगे अंग्रेजी कमेंट्री लेकर। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। We're back live. Keir Shah is bowling his 4th over and the last of his spell. We're back with the English commentary once again, trying to take the quick single. Chance of a run out. Oh, they've missed that. And could be a couple of runs here. Could go to the boundary as well, but there's a fielder out there. They've come back for the third. So what could have been a dot delivery has turned out to be 3 runs. They've taken 2 runs instead of 3, so should have been a chance of a run out. 124 for 5, just 28 required to win. That's a good delivery, but he's played it well. And again he's coming back for a single. What are they doing here? Absolutely poor cricket there. No coordination between the batsmen, both of them. And the non-striker is in such hurry. Yatin Mora doesn't want to give strike to his fellow batter. He just wants to take strike. Needs to be slightly less excited about things, as the match could go out of their control. They need only 28. Still 34 deliveries remaining, so things are under control at the moment. 5 wickets are remaining. Oh, he's played it really well this time, Rajesh Jain, towards the fine leg. This will not go to the boundary, but definitely they will take 2 runs. Probably they'll come back for the third as well, but they settle with 2. That's a very good shot by Rajesh Jain. Using the wrist really well on that occasion. 5 of just 4 deliveries. Getting over a 13 or 14, so both of these players will have to take ownership and responsibility and finish the match for their team. That's a good delivery again. Keir Shah coming back nicely with that dot delivery. And that's what happens when you lose 2 wickets really quickly. Sunny Nagpal was playing so well, just cruising in his innings. Oh, and that's a wide. Another run added to the tally. Top delivery. Great comeback by KU. That's a good shot, just a single. The long off does well. Neeraj Parab coming to bowl his next over.
They haven't taken that single. He missed that completely. That was a full toss. Oh, and what a delivery, and such a wonderful stumping on that occasion, but he was already inside the crease. The batsman, just have a look at that brilliant flight. Missed that completely. Oh, that's a good shot. This should be a single. There's a fielder out there. Plays it well, Yatin Mora. Rajesh Jain on strike now. Yatin Mora on strike. Rajesh played that shot. Oh, what a shot! This should be a boundary, without the shadow of the doubt. Brilliant by Yatin Mora, and that was pitched up. Played it brilliantly towards the extra cover boundary. What a shot, no chance for any fielder. All of them just spectators out there. Foolish delivery, and he made the most of it on that occasion. Yatin Mora has played a very important innings here. 17 he scored, just 15. Oh, and that's a good shot again. Should be a boundary again. There's a fielder out there, but no chance for him. Even Harsh Gandhi could not do much about that. Yatin Mora is on fire. A short delivery, comes back onto the back foot and just punches it brilliantly towards the covers boundary, through the covers for another 4. So 2 in a row, and Neeraj Parab going for 9 runs in this over. This is his last delivery. This is his 4th over. He would want to take a wicket here and complete his 5-er, but Yatin Mora seems to be in between him and his 5-er, and that's a good shot. Just a single this time. Harsh Gandhi doing well, but that's the end of the over. Score is 138 for 5 after 16. Just 14 required to win in 4 overs. Brilliant knock by Yatin Mora. He's on 22, not out. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Mehul Shah being brought into the attack. Just 14 required to win. Oh, and that's a poor delivery to start the spell. On his pad, he's played it well. Could go to the boundary. It's racing across the turf, and that will be a boundary. That's a good shot. Yatin Mora is on fire. He's on 26 now. Just 18 deliveries. Just have a look at that. How the ball rolled across the turf. Went into the fence in the fine leg region. But that was a poor delivery and deserved the punishment which it got. Oh, and that's a flat delivery. Could not do much about that. Utpal 142 for 5, just 10 required to win. Oh, that's a very wide delivery and should have stopped that, the fielder. Misses on that occasion, a single taken easily.
That's a good shot by Rajesh, just a single. The fielder is out there, but he's doing his job really well. Rajesh Jain making sure they don't mess up towards the end of this innings. Just 8 required to win. Jatin Mora 27 of 20. What a knock by him. Back on strike. Rajesh 8 of 11. Full toss. He's played it well towards the deep mid wicket. Should be a couple of runs. He's coming back for the second. Oh, and what has he done? Just a single. Oh, and both of them have missed that. This is sloppy bit of work, and that's a boundary. What should have been at the most a single. Just have a look at that. Oh, that's a poor effort by both the fielders, not just the bowler. And the fielder at long off was just not prepared for that. So 17 overs have been bowled, 149 for 5. Just 3 required to win. Convincing victory this will be for Utpal Gladiators. The Jns Mustangs did well, but Sunny Nagpal did such a wonderful knock, and Jatin Mora towards the end playing a very important innings. It was a good shot by Rajesh Jain in the last delivery of the previous over. Just 3 required to win. Hitesh Patel has been called to bowl his last over. Let's have a look at that boundary in the previous delivery. Rajesh Jain hitting it really well. Oh, and that was some sloppy stuff by the fielding team. Hitesh Patel to Jatin Mora. Played a gem of a knock, 28 of just 21. That's a wide. Under 4 to bowl wide, although would not matter much. 2 required now. 150 is up with that wide. Comes down the track, inside it, should take a single, will take a single. Will they come back for the second? Seems no. So scores are level. Just 1 run to win. This would be a comprehensive victory for sure. Still 17 deliveries left in this innings. But a good comeback by Jns Mustangs towards the end of the innings. Had Sunny Nagpal played another couple of overs, this match could have been finished even earlier. Probably in the 16th over or maybe the 15th over itself. Kind of batting he was doing. That's a good shot, and not taken the single, and he's missed that. But still they don't take the single. That's a good shot this time. Also they will not take the single. It's good bowling by Hitesh. Oh, that's a wonderful shot to finish off the match. Straight down the ground and a boundary. Finishes off in style, Rajesh Jain. Let's have a look at that shot. And that's a very comprehensive victory. What a shot that was, straight down the ground. Raised a bit to the boundary like a trace of bullet. And the Utpal Gladiators have beaten Jns Mustangs by 5 wickets in the inaugural match of the Jfsc Dads Champions Cup. And we thank all the viewers who have joined us for this wonderful tournament. This is your commentator Shalin Gupta signing off. And we'll be back with another match in the Champions Cup very soon. The Dads Champions Cup 2023, the first edition of this wonderful tournament. We'll take your leave, take care of yourself, good night and goodbye.